Okay. So now today we will see how to use this text object, this. So what we will do, first you have to click on this. If you want to write any, if you want to make any name pendant, अगर आपको name pendant बनाना है, or if you want to use your name on ring, you can use this text object. ठीक है? So click here. When you will click here, this box will appear. Whatever name you want to write, you have to write over here, text to create. Suppose I'll write my name. After writing your name or anything what you want to write, change the font. Font option is here. You will click on this drop down arrow and see, you can, if you will change with the mouse, you cannot see the change over here. तो इसको किससे change करना है? With the arrow button in your keyboard. Okay. Up or down. Then you can change the font. You can see the changes over here. If you will click with the mouse, so you can see there is no change in text. Yeah. Right? Yes. So you have to do the changes with the keyboard arrow, up and down. तो ये यहाँ पे change होगा. Then you have to see which one you want. Suppose if you are taking this. Now, if you want bold, click on bold. If you want bold and italic both, click on this. See, it is now slanting. So if you don't want italic, don't click. I want bold. So only bold I have selected. Now, create. First option is curve. Second option is surface. And third option is solid. So first I'll show you the curve. What height you want. If you want more or less, suppose I'm taking 3. If you don't want to change, later on you can use scale command also. So if you don't want to change, keep it like this and okay. Now see. So it's not proper, it's very hazy. ये देखिए. Yes. So now what you will do, you have to click on this because we cannot use this as a proper design. So you have to select this. If this font is used, so what you will do, you will use rebuild command to make this proper. Because if you will use points on, see, it's not possible to change the points because so many points are there. Yes. So select this, use rebuild command. Slightly it will change. So see, 550 points were there. So it was not possible to move 550 points. Suppose I'll take 45. Now can you see the changes? Yes. The black one. The yellow one is what we have created before. And the black one is what we are doing the changes. So suppose I'm taking 50. What changes? The point you will increase, you can see the changes over here. So suppose I'm taking 50. 50. And this delete input should be yes, tick mark. Because if it will not be, then what will happen? Both the curves will be here. See. So if you want to keep both the curves, then you have to do like this or else delete input yes. So that previous one will be deleted and you will get like this. Okay. Now points on and now you can do the changes. See. If you don't want some points, you have to select and you can delete it. If any point it's not needed, so what you can do, you can select and you can delete the points.
Yes? Okay. So now this is not proper, then this. So to make this proper, now this I don't want. So delete it. Select this, delete. See, slide change over here. So you have to see how your design is coming and how you can do the changes using the rebuild command. See, before it was like this. Yes. तो ऐसे change करना है. So if you want that here I want straight line, I don't want this dome part. So what we will do, we cannot do changes over here. What we will do, we will create a line like this. Now select this, trim this part, this and this. See, like this you have to do. Same you have to do over here. Clear? Yes, ma'am. Yes, trim. See. Now you have to select this because it's not join anymore. Here also if you want to do it first all together and then do the changes. Trim. Now select this, join, points on. Now this, delete. See. If you want slightly bring it down, you can do that. This slightly you want to take it inside. Delete. This also take it slightly inside. See. Clear? Yes, ma'am. Yes, sir. Now select this, rebuild. So one by one, you have to do it. So here also 334 points are there. So 50 I'm taking, okay. You have to check if point you can reduce it, you can reduce the point if you want to increase the point. Because 335 points are not easy to move. The points are not easy to move. So what we have to do it, reduce the point, use rebuild command and you have to do that. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So everywhere now, if you have done here, each and every this letter you have to do the same thing. Thus this slanting one, the line what you have taken. For every letter you have to do the same thing. Okay, ma'am. तो ये वाला फॉन्ट जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस करना है. द फॉन्ट इज वेरी इजी. किसी किसी में बहुत कम होता है, किसी में ओवरलैपिंग होता है. सो वी हैव टू सी अकॉर्डिंगली एंड डू दैट.
एक मिनट चित्र. Let's move it up. Now select this, rebuild. So small curve is there, so we will reduce it. Suppose 20 or 15 I'll take. You can do it like this or you can create line. This will be easy, right? Like Yes. this. So you can do like this also. See, Okay, ma'am. this part, if you don't want, then select this, take it here, delete. This point you can bring only in the curves. When you will create surface or solid object, you cannot bring points on it. The points nahi आएंगे. See, same, Mm. you have to select the line. First select this points on. Slightly take it up because we have to delete the points. And this. Okay. Trim. Join. Now this and this, delete it. This one, rebuild. This also you can create one more. You can delete this and you can create. Trim, join, points on. Now select this, press Alt, bring it over here. Yes. Yes. ठीक है मैम. तो ये तो सेम फॉन्ट था, इसलिए मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया. हम्म. फॉन्ट सेम नहीं रहेगा तो आपको वापस से बनाना पड़ेगा.
Yes. So if the curve is not proper, you have to use rebuild command or you have to use points on to create that properly. And then you have to create surface or solid object what you want. Yes, Clear? ma'am. So Yes. select this solid, extrude planar curve straight, one, enter. See. Yes. Now the second one, only surface. So first I'll change the font. If you want to do any changes in surface and font and this solid object, suppose this one I'm taking. This also it's very hazy. When I'll bring it here, you can see surface. Okay. See, Hmm. it's not proper. So, and you can see some surfaces. This A, both the A, you cannot see any surface. सिर्फ lines है इसमें. इसमें आप देख रहे होंगे surface is also there. But here you cannot see, right? Yes. Yes. Be- because this surface, this curve is not proper. When you will bring the curve, only curve. Now you have to check what is the problem, why this A font is not coming at the surface. So zoom it, see the problem. Hmm. So like this, you have to check points on. Again, so many points are there. Select this, delete. Select this, rebuild. 209 points. Now, suppose 20 I'm taking and okay. Now you have to do the changes. अगर आप इसको solid कर रहे हैं, मतलब ये surface create कर रहे हैं, you cannot get points over here. यहाँ पे points नहीं आएगा, ये देखिए. आ रहा है properly क्या? No. No. So if you want to do any changes in the curve, you have to take again the curve, make that proper, and then you can create surface or solid object. Clear? Yes. Yes. इसमें भी one by one आपको पूरे में करना होगा. If it is proper, जैसे यहाँ पे surface नहीं आ रहा है properly. इसमें जब आप देखेंगे दोनों A में नहीं आ रहा है. If you will Hmm. change the font, suppose the font is proper. Suppose this one, surface. Okay. See, if the font is proper, this will come properly. Okay. Okay. Now, if you want that this should be joined, अगर आप name pendant बनाएंगे, it should be connected somewhere, right? ये Yes. ऐसे नहीं आप बना सकते. So what we will do, first copy this. Now you have to connect. So we will connect over here. Slightly it should connect somewhere. Like this. If you want slightly more here, then select this, bring it over here. Like this. See, now this is connected. Hmm. Now, Yes. if surface is created, how you will create a solid object when surface is there? बताइए. Ma'am, solid exclude panel surface. Exclude surface. Very good. So, solid extrude surface straight. Now see. One, enter. Hmm. ठीक है मैम.
सो यू कैन, इफ यू आर सेंडिंग दिस फाइल, अभी जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द डिजाइन वी आर सेंडिंग दिस फाइल टू द कैमिंग पर्सन। सिर्फ ऐसे ही ये 3DM फाइल जो हम बना रहे हैं ये 3DM फाइल है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है उससे ये फाइल बन रहा है, राइनो वाला। लेकिन जब हम उसको कैमिंग के लिए भेजेंगे, कैमिंग क्या होता है, वैक्स पीस जिससे निकलता है, उसके Yes. बाद ही फाइनल गोल्ड या सिल्वर या प्लैटिनम जो आपको चाहिए वो बनेगा। Yes. So for sending to the camming person, you have to create this file to the STL file. ऐसे नहीं Yes. भेज सकते हम, वो भी मैं आपको बताऊंगी that how we will convert the file to STL file. ठीक है, Yes. तो जब Yeah. आप उसको भेजेंगे STL फाइल में तो इट शुड बी, अगर आपको ये ज्वाइन चाहिए, अगर आप इसको बिना ज्वाइन किए या ग्रुप किए भेजे तो वो अलग अलग करके भेज देगा। ही डोंट नो हाउ यू वांट द फाइल, Okay. सो ईदर यू हैव टू ग्रुप दिस, ये एक रहेगा। अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, सो ग्रुप इट एंड देन सेंड द फाइल। और वी हैव टू यूज बूलियन यूनियन, हमेशा सब जगह ये काम नहीं करता है। Okay. बूलियन यूनियन, सी नाउ दिस इज वन। बूलियन यूनियन से क्या हुआ, अब ये वापस से, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसको अलग नहीं कर सकते अब। Yes. तो ये सिंगल हो गया, जब फाइनल जब आप भेजने लगेंगे तब आपको ये करके भेजना है। ठीक है मैम। ओके, Yes. सो दिस इज वन सिंगल Peace. पेंडेंट एंड देन यू कैन सेंड दिस। अगर आपको ये ऐसे मर्ज नहीं करना है, सो देयर इज वन मोर ऑप्शन व्हाट वी कैन डू, वी कैन कनेक्ट वन फॉन्ट टुगेदर। कैसे, वी विल क्रिएट लाइन, ऐसे लाइन क्रिएट करेंगे। If you will create a straight metal from here till here, what will happen? Extra metal will be created, right? उतना Yes. हमें नहीं चाहिए, so we will create it like this. ये जरूरत नहीं है। Now अभी यहाँ पे क्या दिखेगा, 1 मिनट में बता रही हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द ट्रिम कमांड। ये कनेक्टर है, इसको डिलीट करना है, ये नहीं चाहिए। सी, अब ये कनेक्ट करना है, इसको डिलीट किया, ये कनेक्ट हो गया। अब इसको ट्रिम किया, नाउ दिस इज द कनेक्टर एंड ट्रिम दिस एंड ये पूरा डिलीट हो रहा है। 1 मिनट, मीनिंग देयर इज सम इशू, so the issue is it's not connecting here. See, Yes. points on like this, trim। तो अगर कुछ इशू आ रहा है, मीनिंग देयर इज सम इशू विद द डिजाइन और द कर्व यू हैव क्रिएटेड, you have to recheck it. Now join this. Now you can create, एक साथ सेलेक्ट करके you will not create a surface। अगर एक साथ क्रिएट करके पैच करेंगे, see what will happen, ऐसे आएगा। तो वन बाय वन यू हैव टू डू इट। ये देखिए, Okay.
ये सरफेस क्रिएट किया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको सरफेस क्रिएट करके दिखाया, और एल्स डायरेक्टली यू कैन क्रिएट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। नाउ सेलेक्ट दिस solid, extrude surface straight, one, see. Now all the fonts are connected. Okay. Clear? Yes, ma'am. Now the third option. Third option, you don't have to create solid object directly. When you will select this text, change the font if you want. Suppose this is the font. Now solid. Thickness, what you want. Suppose I want 1. Height, I want 4. And okay, see. मैम ये ऑलरेडी सॉलिड बना है। और हाँ, इसमें कुछ नहीं करना होगा। अगर कर्व प्रॉपर नहीं होगा तो ही आपको इसमें करेक्शंस करने हैं, और एल्स इट इज डन। इसको ज्वाइन करना होगा सिर्फ, मतलब हाँ, या कनेक्टर। कनेक्टर यूज करना होगा या फिर ज्वाइन करना होगा, आप ऐसे कर सकते हैं। ये ऑलरेडी ज्वाइन है। इसको इसको डिलीट कर दीजिए, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी ऐसे है। पेस्ट। यस। नाउ आफ्टर दिस, आपने देखा होगा कई बार पेंडेंट थोड़ा सा डोम रहता है या फिर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है, वो कैसे करेंगे? क्योंकि केज एडिट तो सॉरी, दिस पॉइंट्स ऑन वी कैन नॉट यूज इट ओवर हियर, सो टू मेक दैट, और ऐसा हो सकता है कि ये वाला पार्ट, दिस पार्ट आई वांट स्लाइटली आउटसाइड, ये थोड़ा बाहर की तरफ चाहिए, और दिस एंड आई वांट स्लाइटली लॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द लेटर्स। तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट दिस, वी हैव केज एडिट कमांड, केज एडिट, ठीक है। ओके। After cage edit, click on this bounding box and 3 times enter you have to press. 1, 2 और ये 3। Now can you see the points? यस। कमांड याद है, केज एडिट। केज ओके, एडिट। यस। अभी you have to decide from which view you have to do the changes. अगर आपको डोम चाहिए, so you have to select in front view the center 8 points and then you have to take it up. ये डोम हुआ, ये देखिए। ओके। या फिर you want kind of wavy, so you have to select this, take this up, select this, take it down, ये देखिए। यस। तो जैसा भी आपको चाहिए you can do the corrections, and to remove the point you have to press escape esc button, the slight left top left button, you have to select this box, you have to delete, और ये आपका ऐसे आ जाएगा। ओके। अभी suppose in this, in this one again cage edit, bounding box 3 times enter. Now select this point, only points you have to select, कोई भी curve, कोई भी solid object select नहीं होना चाहिए। Take this up, if you want that it should be down you can take this down, ये देखें। यस। So whatever change you want you can do easily. Now in this one, जैसा मैंने आपको बोला that if you want that this n should be slightly bigger, longer than all the rest of the alphabet, cage edit again, bounding box 3 times enter. So in top view only you can do the changes. Select this, see. So select only these 2 points, see. यस। Now this n I want slightly down, see.
Okay. Now, if you want the dome part, select this, take this up. अब देखिए, इस वाले में ये ऐसे डोम है, इस वाले में ये नीचे की तरफ है, एंड ये वेवी है, मतलब Yes. हाँ। तो आप ऐसे चेंजेस कर सकते हैं यूजिंग केज एडिट कमांड। ठीक है मैम। क्लियर? यस मैम। अब ये आप टेक्स्ट क्रिएट करके देखिए, तब तक मैं आपको एक फॉन्ट दे रही हूँ, वो आपको मुझे बना करके दिखाना है। फॉन्ट एज इन लेटर है, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा फॉन्ट आप यूज करेंगे। फॉन्ट आपको मिल जाएगा इसमें, अगर नहीं मिलेगा तब फिर मैं, क्योंकि कई बार होता है कि आप वाले में, मेरे वाले में है, आप वाले में नहीं है, तो पहले आप मुझे ये बना के दिखाइए, तब तक मैं आपको फॉन्ट शेयर कर रही हूँ। ठीक है मैम। मैम आपका ही नेम करके दिखाऊं ऐसे? नहीं, आप अपना वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया। ओके ओके ठीक तो आज मैं सारे ये जो है ना फॉन्ट्स, ये सॉरी टूल्स, ये सारे कंप्लीट कर दूंगी। है। ओके मैम। ठीक है, लेकिन जहां पे आपको लगे नहीं इससे ज्यादा नहीं करना है, वो मुझे आप वहां रोक दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ। ओके।
मैम मैंने कर लिए तीनों ट्राई। पिक्चर शेयर करिए। चितवन, इसको आपने डोम और केज एडी यूज नहीं किया आपने। अच्छा वो रह गया मैम अभी। हाँ, यूज करके डोम दिखाइए और वेव करना। हाँ, वो ठीक है। कमांड यूज करिए। एक में आप वो डोम ऊपर की तरफ, दूसरा वाला नीचे, और तीसरा जो वेव वाला दिखाया, तीन बनाया है, ठीक तीनों में वैसे करके दिखाइए। ठीक है। ठीक है।
मैम बाउंडिंग बॉक्स क्लिक करने के बाद वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। चित्र और मैम केज एडिट के बाद बाउंडिंग बॉक्स, उसके बाद ना वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। नहीं, उसके बाद सेलेक्ट नहीं करना है, पहले केज एडिट, वहां पे बाउंडिंग बॉक्स लिखा होगा। बाउंडिंग बॉक्स के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो 3 बार आपको एंटर प्रेस करना है, कुछ क्लिक अच्छा, नहीं करना है। ठीक है मैम, हो गया। देखिए, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो देखिए, इसको सेलेक्ट किया, पेज एडिट, बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करेंगे और अब आपको कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना है, 3 टाइम्स एंटर प्रेस करना है, ये अपने आप आएगा पॉइंट्स एंड बॉक्स। बॉक्स आया मैम, पॉइंट्स नहीं आए। एक बार और प्रेस करिए फिर तब आएगा, आपने 2 बार किया है मतलब। यस, आ गया। आ आ गया, गया। हाँ। और मैम फिर ये बॉक्स कैसे रिमूव होता है? क्या? जब इसको डोम कर दिया तो बॉक्स कैसे रिमूव होगा? अच्छा, डिलीट करना है बस। ठीक है, हो गया मैम। 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही, बस 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब बोलिए। ओके, हो गया मैम, हो गया। हो गया, हाँ ठीक है।
मैम देखना एक बार। एक मिनट। चितवन इसमें ये प्रॉपरली डोम, ये देखिए ये स्ट्रेट है, और जो मैं आपको दिखा रही थी ये देखिए, एक मिनट, ये पूरा ऐसे डोम है, ये फ्लैट नहीं है। आप वाला क्यों हुआ? क्योंकि आपने जब केज एडिट यूज किया है तो ऊपर के पॉइंट्स मूव किए, नीचे वाले पॉइंट्स आपने रहने दिए। ओके, सारे मूव ठीक है। करने हैं हमें। हाँ हाँ। अगर ठीक आपको है। ऐसा चाहिए जैसे मैंने दिखाया, उसमें आपको सारे पॉइंट्स मूव करने पड़ेंगे सेंटर के, ओके या तो ओके। ऊपर या फिर नीचे। ठीक है। ठीक है। यस। ओके। नाउ आफ्टर दिस, मूव कमांड। So if you want to move this font, the name on this line, ये पूरा font ये मुझे यहाँ पे चाहिए. If you will do it manually, will it be proper? ये देखिए, ठीक है. So this is not coming proper. Suppose this I want exactly on the end of this line. तो अगर आप manually करेंगे ये properly नहीं आएगा. ठीक है. So if you want to move point to point, मतलब एक point आपको दूसरे point पे लेकर जाना है. If you want to place a font or a or letter or object exactly on that particular point, you can use move command. Move command use करेंगे तो क्या होगा? Point to move from. Select this point and you can place it easily here. ये देखिए आपको show करेगा this is the end. ये देखिए आ गया exactly. यस। Not only this, अगर कोई भी object आपने ले लिया, suppose मैंने यहाँ पर place कर दिया, अब मुझे ये जो है वो यहाँ सेंटर में चाहिए, ऐसे तो प्रॉपरली सेंटर में नहीं आएगा. तो यू कैन यूज मूव कमांड, सेलेक्ट दिस, सी, यस। क्लियर. यस। सपोज दो तीन ऑप्शन बता दे रही हूँ कि आपको वो समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ. टेकन वन लाइन, अब मैं ये बोल रही हूँ एट द मिड ऑफ दिस लाइन आई वॉन्ट टू प्लेस दिस. तो मिड अभी तो आपको पता ही नहीं है. अगर आप ऐसे करेंगे कि मिड कहाँ पर है, यू हैव टू फर्स्ट मेजर दिस, then you have to see the half of it where it is, and then you will place this. तो आप सीधे move command use करिए, select this, it will show you this is the mid, यहाँ place कर दीजिए. Clear? यस। Move यस। command. यस मैम। Okay. Now next is copy command. एक copy तो मैंने बताया है, you can press alt, you can copy as many object as you can or as many number you want, you can copy it, right? Alt राइट। से. दूसरा, if you will use this copy command, ये देखिए, 1 minute, जहां पे भी आपको प्लेस करना है, आपको कुछ प्रेस नहीं करना है, सिर्फ कॉपी कमांड सेलेक्ट करना है. जो ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करना है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट एंड यू कैन प्लेस वेयर एवर यू वांट. ओके। दिस इज कॉपी कमांड. ठीक है. यस मैम। नेक्स्ट इज रोटेट कमांड. सपोज, एक मिनट डिलीट करती हूँ. सपोज मैंने एक सर्कल बना लिया है,
Then I'll take letter P. यहाँ मैंने सेंटर में प्लेस कर दिया. Now, if I want to place this P here or here, अभी ये आप ऐसे प्लेस करेंगे. Suppose I'll copy this. अब ये properly place होगा क्या? नहीं. You have to tilt this, then you have to place it, right? Right. So we will select this. We have the option of rotate command because I want this font here also and the other place also. So copy should be yes. फिर सेंटर से बना हुआ है जीरो एंटर. इसको सेलेक्ट किया. अब देखिए जहां जहां आपको प्लेस करना है ये आप कर सकते हैं. ये देखिए. Yes. तो दिस इज रोटेट कमांड. अगर Okay, आपको ma'am. डायरेक्टली यहाँ पे करना है स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, ये देखिए. क्लियर? Yes, ma'am. Now after this we have scale command. In scale we have three options: scale 1D, scale 2D, or we can call it scale and scale 3D. तो क्या डिफरेंस है तीनों में? If it is only curve, अगर सिर्फ ये कर्व है, जीरो एंटर, यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल है, you have to use in this only scale which is scale 3D और scale 1D. scale 2D कर्व में यूज नहीं होता है. तो स्केल कमांड जीरो एंटर, अगर आप स्केल को यहां से यूज कर रहे हैं from this end till here, see you can scale it but it's coming sideways, it's not in the center. Yes. Right? Copy should Yes. be yes. यही चीज अगर आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे, जीरो एंटर फ्रॉम हियर, सी इट्स इन द सेंटर. Yes. तो अगर आपको सेंटर में बनाना है, सेलेक्ट फ्रॉम द सेंटर एंड देन यू हैव टू मेक द सर्कल. ठीक है? Yes, ma'am. नाउ if you are using scale 1D, suppose zero enter, I'm making 3 4. Now one I want like this, but the other one I want the thickness less here and more here. तो scale 1D, scale 1D में क्या होता है? It will not scale, वो stretch होता है. मतलब I'm taking this as my first point and second because I want to keep the gap here less. So ये देखिए. Okay. अभी क्या हुआ? ये जिस साइड में मुझे कम करना था, you have to select that at the end and you have to stretch till where you want. So suppose अगर मैं इसमें कर्व ले लूं, if you will use scale command here in the font, ये देखिए ये क्या हुआ? ओवरऑल स्केल हुआ, राइट? बट इफ यू विल यूज स्केल 1D, if you will start from here, आपको पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट कहां से ले रहे हैं, फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, सेकंड कहां से ले रहे हैं, ये दिखाएगा. ये देखिए ये स्केल हो रहा है क्या? नहीं, ये स्ट्रेच हो रहा है, राइट? Okay. इफ यू विल Yes. सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर, ये देखिए. Yes. इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, दोनों तरफ से स्ट्रेच होगा, ये देखिए. तो दिस इज Yes. स्केल 1D and if it is overall scaling, that is scale 3D. अब मुझे ये यहाँ पे प्लेस करना है सपोज, फिर मुझे इसको स्केल 1D यूज करना है. अगेन सेलेक्ट this and take this up. ये देखिए. Yes. क्लियर? Yes. दिस वाज ओनली कर्व. अब 3D ऑब्जेक्ट में
3D ऑब्जेक्ट में आप सारे व्यूज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक मिनट। Now I'll select this scale 3D or scale. When you will scale this, scaling overall. अभी देखिए, you can see the size of the P is also increasing and the height also, Yes. right? तो scale में दोनों चीज scale होता है. This is 1 and this is 2.3. Clear? Yes. और इसमें भी आप देखेंगे that this is small and this is big. This is scale 3D. Now, what is scale 1D? Scale 1D when you are using only you have to use in the thickness. वो thickness change होगा. See, first point, second point and see like this. यहाँ पे कुछ changes हुए क्या? No. Only the height will change in scale 1D. Okay. और when you will use scale 2D, scale 2D, इसमें सिर्फ इसका size change होगा, not the height. When you will select from here till here, ये देखें. Now you can see the size change, but the height is same. Okay, ma'am. तो स्केल 1D में हाइट चेंज होता है, स्केल 2D में द साइज ऑफ द product, the design what you are making, the curve, solid object what you are making, that will change. And when you are using scale 3D or scale command, both will change, the height and the size of the Right. object. Yes. Clear हो गया scale 1D, 2D and 3D? Yes, ma'am. Okay. After this we have this, we don't need it here. अभी क्या है? रेक्टेंगुलर अरे. मैंने ट्रांसफॉर्म में आपको अरे पोलर बताया है, लीनियर बताया है, अलोंग कर्व बताया, राइट? Right. सिर्फ रेक्टेंगुलर नहीं बताया. इसमें क्या होगा? जो भी आप डिजाइन बनाएंगे वो रेक्टेंगुलर शेप में फॉर्म हो सकता है. मतलब सपोज आई एम क्रिएटिंग वन सर्कल ओवर हियर, ऐसे. नाउ इफ यू आर सेलेक्टिंग दिस रेक्टेंगुलर अरे, नंबर इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में आपको कितना चाहिए? सपोज आई वांट 8. नंबर इन वाई डायरेक्शन, सपोज आई वांट 5. नंबर इन z डायरेक्शन, ये मुझे 1 ही चाहिए, 1. एंटर. यूनिट सेल और एक्स स्पेसिंग, कैसे स्पेसिंग आपको चाहिए? अभी देखिए. Yes. तो आप एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं. इफ यू वांट दैट इट शुड बी मर्जिंग, यू कैन टेक इट लाइक दिस. ये देखिए. नाउ सी, जैसा आपको प्लेसमेंट करना है, यू कैन डू दिस. ये देखिए, एंटर एंड यू विल गेट दिस. ठीक है. So you can create a pattern like this. Now select this solid, extrude planar curve straight, 1, enter. ये देखिए. Yes, ma'am. Clear? Yes. अगर आप एक फ्लावर वाला पैटर्न, मतलब सर्कल से ही फ्लोरल टाइप बनाएंगे, 1 मिनट, 0, एंटर. ये देखिए, पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं. ये देखिए. Yes. तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा पैटर्न चाहिए या फिर क्या चाहिए. एंटर. ये देखिए. Now select this, create patch. ओके. अभी देखिए यहाँ पे आ गया. अब आपको डिसाइड करना है विच पार्ट यू वांट सॉलिड एंड विच यू डोंट वांट. तो मुझे सिर्फ ये फ्लोरल वाला पार्ट जैसा दिख रहा है ना, मुझे ये चाहिए. Yes.
तो select this, you have to split the entire design and enter. ये देखिए, अब जो नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर दीजिए. सी, यस, क्लियर? यस, क्लियर मैम. ऐसे आप बना सकते हैं. तो आपको अगर एक पैटर्न है वो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये देखिए. ठीक है मैम. नाउ इफ यू वांट दिस स्ट्रेट, अभी ये स्ट्रेट नहीं है और ये आप यहाँ पे नहीं कर सकते कि आपने केज एडिट यूज किया और इसको मूव कर दिया, नहीं. तो you will create a rectangle like this, select this, split with this and enter, और इसको आप डिलीट कर दीजिए ऐसे. ओके. क्लियर? ओके, यस मैम. यस. अभी if the design is, ये सब अलग अलग है, राइट? सो इफ यू वांट दिस टू मूव दिस टुगेदर, आपको इसको ग्रुप करना होगा. बिकॉज इफ यू विल यूज दिस अलाइन ऑब्जेक्ट, अलाइन ऑब्जेक्ट में क्या है, इफ यू वांट टू मूव दिस अलाइन टॉप, ये देखिए अभी ये क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज हो गया, राइट? बिकॉज इट्स नॉट ग्रुप. वो सिंगल सिंगल जितना है ना वो सब वो टॉप में मूव कर रहा है या फिर सेंटर ले रहा है. अगर आप ये अलाइन सेंटर ऑप्शन है, एक मिनट, अलाइन सेंटर, ये देखिए सब, हर एक लीफ जो पेटल यहाँ फ्लावर का दिख रहा है सब सेंटर में आ गया. सो आई वॉन्ट एग्जैक्टली लाइक दिस, सो यू हैव टू ग्रुप दिस फर्स्ट. अभी जब आप अलाइन सेंटर यूज करेंगे, ये देखिए जीरो एंटर आ गया प्रॉपरली सेंटर में. अगर आप अलाइन सेंटर यूज नहीं कर रहे, यू कैन सेलेक्ट द स्मॉल बॉक्स. व्हेन इट इज सेलेक्टेड यू कैन सी अ स्मॉल बॉक्स ओवर हियर है यहाँ पे. यस. सेलेक्ट दिस बॉक्स, जीरो एंटर, ये देखिए. अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं, सपोज अब मुझे ये सेंटर में लेकर आना है, इफ यू विल ब्रिंग दिस अलाइन सेंटर, ये देखिए हर एक लेटर वो सेंटर में आ गया. मुझे तो ऐसे चाहिए, ये नाम पूरा चाहिए, सो यू हैव टू ग्रुप दिस फर्स्ट. ओके. ठीक है, उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करके जीरो एंटर करना है, तो ये यहाँ पे सेंटर पे आएगा. क्लियर? यस मैम. तो ऐसे कोई भी इमेज आपने लिया वो सेंटर में नहीं है, तो आप ऐसे, या कोई ऑब्जेक्ट आप ऐसे सेंटर में लेकर आ सकते हैं. तो in this align top, see it will move top and bottom. If you are using this right and left, align right and left, it will move like this. और align center, ये ज्यादा यूज में नहीं आता है, it's same. Clear? यस मैम. So all this, it's not flow along surface और ये सब जब हम सॉलिड और डिजाइन्स करेंगे उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी. ठीक है? और ये सब अभी नीड नहीं है. तो सारे टूल्स कंप्लीट. ठीक है मैम. ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा. जो भी डाउट होगा वो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा. और जो मैंने आज आपको ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट वाला बताया है, मैं एक दो डिजाइन आपको शेयर कर रही हूँ, वो आपको बना करके मुझे दिखाना है. और ये सारे टूल्स जो है एक बार वापस से रिवीजन कर लीजिएगा. जहां डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा. ठीक है मैम. ठीक है, यस. तो रिकॉर्डिंग में आपको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लगेगा वो कन्वर्ट होने में. उसके बाद मैं आपको शेयर करती हूँ. ठीक है, ओके. यस मैम. ओके.